Hello students, in last video we see about the cell organelles peroxisome. Today we see the structure of glyoxysome. The question asked in exam is like give the cytological details of glyoxysomes. So let's see about the glyoxysomes. The scientist Pallady first discovered the small bodies in a cells as like the peroxysomes. Here in this figure there is a peroxysomes. Similar structure are seen in the glyoxysomes, but their functions are the different. These bodies are associated with the glyoxylate metabolism. Therefore, the scientist Faraday he called this structure as a glyoxysomes. तो जो साइंटिस्ट पैलाडे उन्होंने से फर्स्ट स्मॉल बॉडीज डिस्कवर की. Then these bodies are gave the name as a glyoxysomes. Glyoxysomes नाम क्यों दिया गया? क्योंकि it is associated with the glyoxylate metabolism. सिमिलर हमने पेरोक्सिसोम्स में देखा था कि पेरोक्सिसोम्स क्या करता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसलिए उसे नाम दिया पेरोक्सिसोम्स. यहाँ पे क्या है कि these bodies are associated with the glyoxylate metabolism, इसलिए इस सेल ऑर्गेनेल को नाम दिया glyoxysomes. The size is about 0.5 to 1 mu and the number per cell is about 17 to 100. सिमिलर वे जैसे हमने पेरोक्सिसोम्स में देखा था उसी तरह ग्लायोक्सिसोम सेल्स भी हमें 70 to 100 नंबर तक पर सेल्स मिलती है. इसकी रेंज है अबाउट 0.5 म्यूएम टू 1 म्यूएम इन साइज है इसकी. देन शेप भी सिमिलर है पेरोक्सिसोम्स की तरह. इट इज स्मॉल spherical body and covered with a single membrane. Its composition of membrane is almost same like the endoplasmic reticulum. इसका composition भी similar है endoplasmic reticulum की तरह. Then let's see the structure. स्ट्रक्चर इसका सिमिलर है, जैसे पेरोक्सिसोम का स्ट्रक्चर था उसी तरह ग्लायोक्सिसोम का भी स्ट्रक्चर है. इट इज़ एक्सटर्नली कवर्ड, इट इज़ बाय द सिंगल मेम्ब्रेन दैट इज लिपिड बाइलेयर. देन इट इनक्लोजेस द साइटोसोल. इट इज amorphous semi solid. Then at the center there is the solid mass, that is central core or crystalline core. Then the cytosol as well as central core contains protein and enzyme for glyoxylate metabolism and enzyme for gluconeogenesis. तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है. सिंगल मेम्ब्रेन है, इट इज लिपिड बाइलेयर, एनक्लोजेस साइटोसोल जो कि एमॉर्फस सेमी सॉलिड है. एट द सेंटर सॉलिड मास रहता है which is known as a central core or crystalline core. Then this cytosol and central core contains some proteins and enzymes which required for the process of glyoxylate metabolism and gluconeogenesis. That is the both important functions of the glyoxysomes. Next, move towards the functions of the glyoxysomes. First function, that is the glyoxylate metabolism. Mostly this glyoxylate metabolism is carried out in the ऑयल सीड्स, जो कि फैटी सीड्स रहते हैं उसमें ग्लायोक्सिलेट मेटाबॉलिज्म होता है.
जब भी ऑयल सीड्स, फॉर एग्जांपल रिसिनस सीड्स का आपको एग्जांपल दिया है। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, व्हेन, जब भी हम सीड्स ग्रो करते हैं, उसका जर्मिनेशन होता है, उसी टाइम के क्या होता है, जो सीड्स के अंदर फैट रिजर्व फूड रहता है, फैट एज अ रिजर्व फूड रहता है, तो दिस फैट इज कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। उसे हम देन in this conversion there is the glyoxylate metabolism carried out होता है। वहाँ पे again this breaking down of the fatty acids होता है। then this fatty acid is converted into the carbohydrates and these carbohydrates used for the germination of seeds। clear? तो क्या ग्लायोक्सिलेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मोस्टली जो ऑयली सीड्स है उसमें जो फैट एज अ रिजर्व फूड रहता है, फैट का कन्वर्जन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है। देन दिस ग्लायोक्सिलेट मेटाबॉलिज्म कैरिड आउट होता है। वहाँ पे अगेन उस फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होके वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। देन दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज टू द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो दिस इज द ग्लायोक्सिलेट मेटाबॉलिज्म। Then second function is the gluconeogenesis। सेम वे क्या होता है यहाँ पे कि इन कार्बोहाइड्रेट जो कि सेल्स के अंदर एज अ रिजर्व फूड रहता है, देन दिस एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन दिस ग्लायोक्सिसोम्स सेल ऑर्गेनेलिज carried out the gluconeogenesis process। In this gluconeogenesis, carbohydrates again converted into the glucose and supply the energy for seed germination। In this both the process, the glyoxysome cells organelles plays an important role। First function in the glyoxylate metabolism and gluconeogenesis। Then next part is the biogenesis। Same as like the peroxisomes, the formation of glyoxysomes takes place from the endoplasmic reticulum। See in the figure, the endoplasmic reticulum goes into elongation, there is the bud formation, then after budding, bud is converted into the glyoxysome। The simple way similar एज लाइक पेरोक्सिज्म जैसे हमने देखा था, सेम यहाँ पे भी बायोजेनेसिस कैरिड आउट होता है और टेक्स प्लेस होता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्टली समराइज दिस ग्लायोक्सिसोम्स। द साइंटिस्ट Faraday discovered glyoxysomes। These bodies are associated with the glyoxylate metabolism, that's why they gave the name as a glyoxysome। इसकी साइज है 0.5 to 1 म्यू। देन द नंबर्स एज लाइक पेरोक्सिसोम्स 17 to 100 per cells। then shape is small spherical and then body is covered with the single membrane। composition is similar as like the endoplasmic reticulum membrane। structure same as the peroxisomes, single membrane enclosed by cytosol and at center there is the core। then it contains the enzymes and proteins for glyoxylate metabolism and gluconeogenesis। this is the structure। नेक्स्ट हमने फंक्शन देखे, इसके दो मेन फंक्शंस है। फर्स्ट वन इज द रिलेटेड टू ग्लायोक्सिलेट मेटाबॉलिज्म एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लायोक्सिलेट मेटाबॉलिज्म देयर इज द इन प्रेजेंस ऑफ ऑयल सीड्स, जो कि ऑयल सीड्स रहते हैं उसमें जब भी जर्मिनेशन होता है एट द टाइम ऑफ फैटी एसिड्स
and glycerol is breakdown and fatty acids from the carbohydrates, which carbohydrates again used for the germination of seeds. Same way in the process of glucogenesis, also glyoxysome cell organelles plays important role in that the reserved food material carbohydrates is again converted into the glucose, and this glucose is help in the seed germination process. So this is both most important functions of the glyoxysomes. And then last part था biogenesis. Biogenesis same as like peroxisomes. यहाँ पे there is the elongation of endoplasmic reticulum, then there is the formation of bud, then again this bud is released and it converted into the glyoxysome. So this is about the cell organelles glyoxysomes. I think all of you clear this peroxisomes as well as glyoxysomes cell organelles.